हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द क्वारंटीन एक्सपीरियंस। हम अब तक घर में बंद हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया की मदद से हम अमेरिका में भी बात कर सकते हैं। सो वी हैव हुजैर बैक हियर विद अस। हाउ आर यू डूइंग मैन? I'm doing good. Welcome to Pakistan as well. I guess दोनों एक साथ ही चल रहा है तो यहाँ डे 15 ऑफ क्वारंटीन है. So good to hear your voice. हाँ, हम I'm दोनों ये hoping एक कि you're क्रॉसओवर fine, your एपिसोड है ये। family's fine. Yeah. या मैन या तो but दिस इज अ क्रॉसओवर एपिसोड। मार्वल डीसी की दुनिया मिल रही है। मोस्ट एंड गेम के बाद सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड यही चीज थी दुनिया में। तो बिल्कुल अभी यू आर सेइंग इट्स डे लाइन 15 लगी ऑफ हुई है मेरे द घर के क्वारंटाइन बाहर. फॉर यू। So Yes, it's day it's day 15 for 15. you? It's day 15 for me, and like basically 15th day of working from home because हमारा ऑफिस जो है वो बंद हो गया था 12 तारीख को. और उसके बाद से घर से काम चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाना बंद कर दिया बेसिकली. तो ये सीन है अब यहाँ पे. और अप्रैल 24 तक जो है But कल it ऑर्डर आ गया था कि नॉन एसेंशियल बिजनेसेस इन वाशिंगटन विल रिमेन क्लोज्ड. So you can get takeout, you can go get groceries, but besides that, even the barber shop is closed now. but there's no enforced lockdown though, right? Because Florida में तो पार्टी चल रही हैं अब तक. So if people want to, they still can. It's not like पुलिस आके आपको पकड़ लेगी. यार वो जो है it's not enforced yet, but I think they will eventually enforce it, and it's only a matter of time. और क्यों यार, DC ट्रम्प में तो कह रहा है मतलब कि they're gonna कोई सीन नहीं go है, ahead सब and handle. चिलेंगे, ईस्टर पे सब पार्टी करेंगे. देखते हैं क्या होता है, लेकिन ट्रम्प थोड़ा पागल है और उसको भी ज़रा वो फिक्र हो गई है कि इकॉनमी ज़्यादा बुरी ना हो जाए. तो उस वजह से जो है वो थोड़ा So घबरा गया है I mean, बेसिकली. अगर उर्दू में कहा जाए तो थोड़ा घबरा गया है. भाई तो घबराना ही तो नहीं है, लेकिन घबराना ही तो नहीं है. ये उसको यार किसी ने बताया नहीं कि घबराना नहीं है. अभी तक किसी ने बताया नहीं उसको, लेकिन थोड़ा टेंशन में तो आ गया, सभी आ गए. लाइक कल सेनेट ने भी बिल पास करने अप्रूवल दे दिया फॉर $2 trillion स्टिमुलस ईयर. तो है काफ़ी बैड सीन है यार. मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक अगर तुम लास्ट वीक भी 2 हफ्ते पहले भी मुझसे पूछते कि कितना बुरा सीन हो सकता है, मैं कहता यार इतना बुरा नहीं सोचा था. और हर हफ्ते यही होता है कि your expectations are exceeded in terms of the nature of this crisis, whether it's in Pakistan or elsewhere, because it's unlike anything at least we've seen That's before saying or heard of in our times. That's saying a lot coming from you, Uzair, because usually your expectations are quite pessimistic. So if you're saying this is a worse scenario than your worst case scenario, then तो it seems like we're pretty damn screwed. यार अब डेटा तो आया नहीं है, तो आई मीन लुक, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. मैं किसी को कह रहा था उस दिन के 3-4 दिन पहले कि मेंटली तो मैंने 8 हफ्ते और घर में रहने का प्लान कर लिया है कि अब कहीं नहीं जाना मई से पहले. मेरी बर्थडे मई 5 है, तो मैंने कहा बर्थडे से पहले तो कहीं नहीं निकलने का सीन हो रहा है. लग तो यही रहा है. एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ के इतना बैड सीन ये है कि आप बेसिकली कहीं कुछ काम नहीं कर सकते ना. लोगों का जो काम करने का ऑप्शन है वो नहीं है अब. तो जब तक वो नहीं घर काम पे जा सकेंगे, जब तक बेसिक ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में. और दैट हैज़ अ इफेक्ट ऑन एवरीबॉडी, whether I you're agree rich with or you. We'll poor. come to our own um, personal problems later. But coming back to Trump, अभी Trump ने बोला कि you know what the line that's being peddled by the far right media, the solution can't be worse than the virus. The solution can't be worse than the virus. yes. And then I saw our own press conference, which in my opinion was not that bad. Honestly, अगर इमरान खान की आखिरी press conference जो थी journalist के साथ, I think it is the best we could have hoped for. It was a lot better than the first two. But the line that's being peddled is the same कि यार solution can't be worse than the virus. तो ये हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ट्रम्प की फिलॉसफी और पॉलिसी. ये काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ, बट किसी ने इतना क्लियर कट कंपैरिजन किया नहीं है कि हाउ वी जस्ट मिमिक द नैरेटिव. Yeah, I mean, I think it's not just Pakistan versus or some people in Pakistan versus what the right wing in the US is saying. I think there is an undercurrent of that belief. UK में भी यही सीन था शुरू में, फिर Boris Johnson finally acted, and other places have had that same view.
Ironically, like my focus is South Asia, तो मैंने interestingly इंडिया में ये नहीं देखा अभी तक from their government. They've been very keen on कि भाई 21 दिन के लिए बंद कर रहे हैं और आपने घर में बैठना है for whatever reasons the government is telling them. Um, but I think वो जो overlap जिसकी तुम बात कर रहे हो कि the cure can't be worse than the disease type situation, उसके अंदर एक एक तरह से जो है वो एक्सपर्ट लेड ओपिनियन लेने के बजाय जो है वो रिलाई कर रहे हैं अपने इंटुइशन पे. और आई थिंक उस इंटुइशन ने जो है ना वो काफ़ी ख़राब कर दिया सीन. शुरू में यहाँ पर भी यूएस में भी यही था कि नहीं जी यहाँ तो नहीं आएगा, चाइना में है, हमने चाइना से फ़्लाइट्स बंद कर दी. दैट बॉट टाइम टू द यूनाइटेड स्टेट्स. लेकिन उसमें उन्होंने एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के यार मतलब देखो ना यूएस के अंदर आफ्टर इबोला देयर वाज अ पेंडेमिक डेस्क विद इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. ओबामा के ज़माने में बनाई गई थी क्योंकि ये एक रिस्क था जो कि हर उस टाइप की उस ज़माने की गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड टॉक्ड अबाउट इट. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैड टॉक्ड अबाउट इट. बिल गेट्स हैड टॉक्ड अबाउट इट. तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने वो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेवल पे एक जो है डेस्क बनाई थी जो इन चीज़ों पर नज़र रखेगी और सपोर्ट करेगी इन केस समथिंग लाइक दिस हैपन. ट्रम्प ने वो बंद कर दी आने के बाद. कल की रिपोर्ट थी पॉलिटिको की. आई हैवंट read the whole thing, I just read an excerpt of it के when Trump joined, there's a part of the transition was that his team was shown the playbook which was shared with them on how to deal with a global pandemic if it were to come to that. They did not pay attention to it. और उन्होंने जो है उसको इग्नोर कर दिया, उस प्लेबुक को बेसिकली थ्रो आउट कर दिया. तो जब क्राइसिस आया तो अब वो बैठ के जो है they're going back to developing the wheel which was already there in the first place. तो आई थिंक यहाँ पर ये बैड सीन हुआ है कि the federal government was just caught napping for the last 2 months and it only just has woken up to what's happened. I think it's quite similar to what's happening in Pakistan as well. Not just the federal government, but वैसे भी सारे लोग. I don't know क्या मेंटली चल रहा है which makes people think कि कोई ना कोई वजह कोई ना कोई ढूंढ ही लेता है कि यार हमारे यहाँ नहीं होगा. Whether it be क्लाइमेट, वेदर और इम्यून सिस्टम्स. आजकल ये चल रहा है कि जी पाकिस्तानी इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच आई हैव नो आइडिया वेयर इट कम्स फ्रॉम. वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स दैट आई रेड ऑनलाइन वाज कि वी आर नॉट गोना गेट इटलीज डेथ रेट, क्योंकि इटली की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 81 है और हमारी 67 है. तो हमारे वैसे ही इतना नहीं जिंदा रहते कि वो कोरोना उनको मारे, वो पहले ही मर जाते हैं, तो कोरोना का डेथ रेट कम होगा. एंड आई एम लाइक जो मिल जाए ना हमें ऑप्टिमिज्म के लिए. सो दीज इंट्यूशंस एंड ऑप्टिमिज्म while we're not listening to scientists is quite dangerous. Lekin this has been great for your candidate yaar. I was under the impression that once a pandemic like this strikes, people will wake up to the necessity of Medicare for all, or increased minimum wages and more socialist policies. But it's led to a real upturn for Biden because people are like, bas isko reverse karo, let's go back to what's familiar. You know what was not selling pehle Biden ke liye ke I know, I've been there before. Now people are like, we need exactly this. Yeah. So this has been great for Biden. It has been, and I mean, I'll push back on it, given that you said he's my candidate. I mean, I would support whoever eventually wins the nomination. And yes, I'm not a socialist. We've had that talk many times privately. Yeah. But I would say he had traction before as well, right? I mean, there's एक चीज जो हम मिस कर जाते हैं both Pakistan discourse के अंदर और US and elsewhere is that it is very easy to think that the Twitter crowd or the Facebook crowd is a reflection of society. And we start believing it, even though in the back of our mind, we know that that's not true. So when you look at the activity on social media throughout the Democratic primary campaign, you would think that Biden is dead. And he was in Iowa and New Hampshire, although those states don't really matter in the larger scheme of things. But if you are following local press, and what was going on in states like the Carolinas and what was going on in states like Nevada and California and elsewhere, you saw that part of the electorate in the Democratic Party, उसकी support जो है वो social media पे reflect नहीं हो रही थी.
वो नंबर्स ने फिर दिखाया ना, बिकॉज यू ऑल्सो सॉ कि उसमें एक जनरेशनल डिवाइड भी है कि जो अंडर 30 ईयर ओल्ड्स थे वो हेविली बर्नी की तरफ गए, दे आर मोर टैक्स हैवी, तो आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं सोशल मीडिया पर। और जो बाइडन क्रू था वो नॉर्थ ऑफ 50 है, राइट। और अब जो है बाइडन, व्हाट्स वर्क फॉर बाइडन इज दैट he's like, I've been in the National Security Council, I've been in these tough decisions, I know how the process works, and Trump is screwing it up. But masla ye ho gaya hai कि, I mean, I don't know if you've seen the latest polls or not, but in the last week or so, Trump ki approval rating has jumped by about 2 percentage points overall. So he's at 49% now, based on latest polling data. तो यू नेवर नो, अगर ये क्राइसिस अगले 4 हफ्तों में ख़त्म हो जाता है और $2 ट्रिलियन से जो है एक रिसेशन जो है वो सिर्फ 1 या 2 क्वार्टर के लिए रहती है, और बाय नवंबर जो है वो स्टॉक मार्केट इज अप एंड द इकोनॉमी इज अप, इट्स हार्ड टू बीट हिम देन, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड I मेरे think लिए it's एक hard to beat पर्सनल him right कॉन्फ्लिक्ट now. I don't और I don't see a way Biden will beat Trump. yeah, I mean, it will be hard. It's not an easy thing, especially if the COVID-19 goes away quicker than what everyone thinks right now, and the economic crisis is not as bad. Lekin, uh, at the same time, you have this conflict. At least I have. I was going to ask you the same thing in terms of Pakistan में क्या हो रहा है. लेकिन मेरा conflict ये है कि I don't like Trump. I hate him, right? I do not think he is worthy of being the president of the United States. But at this point, I want him to succeed, because if he fails, tens of thousands of people, maybe hundreds of thousands, maybe millions will die, right? So there's this inner conflict that you're like कि यार मतलब कर ले काम सही, लोगों की जिंदगियां बच जाएं, और वो ज़रूरी है, लेकिन अगर वो काम सही हो गया तो उसने नवंबर में तो जीतना ही है। तो एक वो इनर कॉन्फ्लिक्ट भी है एट द सेम टाइम फॉर दिस। आई डोंट नो पाकिस्तान में हाउ डू यार यू मेरे सी लिए थिंग्स ये प्लेइंग एंड बिल्कुल वेदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ये मेरे लिए बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यार। मेरे लिए तो इट्स क्वाइट क्लियर। इवन लाइक पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वेदर इट बी करतारपुर, वेदर इट बी द इकोनॉमी, वेदर इट बी एनीथिंग, I fully support Imran Khan in anything that's good for the country. I don't think PTI government is capable of doing a lot, which is great for the country. But even if it's not a full-blown crisis, even if it's something minor, I would hope for the best. फिर elections में जो हो वो हो. But I would always hope कि ठीक है, when push comes to shove, like for instance Trump की administration में भी, I listen to Dr. Fauci and I'm like, thank God this person exists. He's always so clear, he's always so या articulate. So as long as Trump is like, भाई तुम लोग कर लो जो करना है, और Trump को they almost need to ignore him at this point. So if they manage to do everything despite of him and save lives, which is tough because अमेरिका में भी वही एक पेंडू सोच है जो पाकिस्तान में है कि नहीं जी हमें तो कुछ नहीं होगा, होना है तो हो जाए, हम तो करेंगे जो करना है. Those ideas of individual liberty and freedom have been taken to such a nth degree that literally people are buying guns because they think they can shoot the coronavirus. So it is quite dangerous in a country like the US to control this. And इस वक्त socialists are celebrating a lot online. I wouldn't go as far as to say this shows the victory of the Chinese system over the American system, because I still believe in democracy. But countries which are a lot more totalitarian, they might just have an easier job of tackling a pandemic like this. Where Wuhan, literally, they could lock people, or they could make people walk through whatever those were. They built these tents जिसमें बस कुछ gases थी, and every citizen had to just walk through without knowing कि है क्या, कि बस इससे आप sanitize हो जाएंगे somehow. तो ये तो नहीं हो सकता यूएस में, but it just makes it a lot more dangerous because it could take one cluster, it could take one spring break party in Florida to screw it up for millions. तो नहीं यार, मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ये. लेकिन आप हमारी गवर्नमेंट कैसे देखते नहीं, हैं? कॉन्फ्लिक्ट मेरे लिए भी नहीं हाउ है, वुड यू रेट होल पीटीआई एंड हार्टेडली इमरान खान सो फार? सपोर्ट यार। but I first, like, I agree, there's no like my meaning of the conflict was like कभी कभार दिमाग में होता है कि यार मतलब
ये ज़रूरी है, कर लो कुछ बेहतर कर लो, एंड देन यू आर लाइक यार चलो नवंबर में फिर देखी जाएगी. बट एनीवेज ऑन द चाइनीज पॉइंट आई थिंक लाइक यस ऑफ कोर्स ऑथोरिटेरियन, लाइक आपने अगर मिलियंस ऑफ वीगर्स को कैंप में रखने की प्रैक्टिस की हुई है तो आप वुहान को भी शट डाउन कर सकते हैं. तो डेमोक्रेसीज में आसान नहीं होता ये करना, वो चाइना का एक एडवांटेज है इन यार अ उज़ैर, हमने ये सिनिस्टर वे पाकिस्तान में भी सर्वेलेंस स्टेट. चलाना है तो यार, वो हमने ये पाकिस्तान में भी डालना है। यार चल जाएगा, तुम कोई नहीं. इतनी इतनी खुल के पाकिस्तानी बातें करोगे तो यार ये तो हम बैन हो पाकिस्तानी जाएँगे। तुम तो यूएस में रहते हो यार। खादिम साहब ने बोला ना, खादिम जब शुरू में आया था, खादिम साहब ने बोला ना कि और तुसी रखो मुसलमानों ਨੂੰ कैंप विच, तो फिर अल्लाह ने बोला लो फिर कोरोना। अब जब वो पाकिस्तान आ गया है तो ये चाइनीज़ पे अल्लाह का अज़ाब नैरेटिव हैज़ नाउ गॉन अवे। नाउ दैट इट्स इन पाकिस्तान, नाउ इट्स लाइक नहीं, नहीं हाँ. ये अज़ाब नहीं था, ये तो आज़माइश है। या वो मेन स्ट्रीम वो नहीं कह सकते ना जो पहले कह रहे थे. बट नहीं, आई मीन लाइक look, coming back to your question, it was a question I'll ask you as well, because ये same question जो है वो काफी लोगों के दिमाग में. देखो, at the end of the day, there is no doubt, at least personally speaking, like I've been very critical of Khan throughout the last 2 years, almost 2 years he's been in power. That criticism, kafi log kehte hain कि you're anti-PTI and whatever. I'm like, okay, so be it. Like, if that's the label, then let's embrace it. But at the end of the day, there is no doubt about the fact that at this point in time, both you and I can agree that we want Khan to succeed at this crisis. That it's imperative that whoever you are, whether you like him or not, as a human being, you want him and his government to succeed, because the risk of him failing is, just immense. Like, the danger of like what happens if he fails is too crazy, right? So it's unimaginable, the chaos that will be there in Pakistan. I don't know what happened, because this crisis is tailor made for Imran Khan. ये जो अगर खान की हिस्ट्री अगर आप देखें, from his cricketing days to Shaukat Khanum to everything he stood for, there was an inspirational leader, right? जिसने इंस्पायर किया यंग लोगों को पीटीआई ज्वाइन करने में इन द लास्ट इलेक्शन, एंड मूवमेंट चलाई एक. उससे पहले इसी लीडर ने वर्ल्ड कप में, when backs were against the wall, made the team come out all guns blazing and they won the World Cup. He inspired, right? Shaukat Khanum, जब वो start कर रहे थे, I mean, I was young at that time, but I've heard stories from my family that people would be like कि नहीं हो सकता, पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त हॉस्पिटल नहीं बन सकता, और उसने बना के दिखाया, राइट? तो वो एक ग्रिट है उसके अंदर, as a person, as a leader, and he inspires. I mean, let's be honest, like, you listen to him speak in a room. I have been in a room twice with him. Like, he's just inspirational. He has a presence, and I don't see that leader when I hear him talk in the press conferences or about this disease. He's एक self doubt है. और मुझे नहीं पता वो सेल्फ डाउट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आई एग्री, लाइक anyone who is rational knows the limitations of the Pakistani state to respond to this. There is no doubt about it. कि जो capacity है, चाहे financial resources की हो, चाहे healthcare की हो, चाहे just capacity of the state to enforce a lockdown हो, वो नहीं है. लेकिन एक लीडर का काम होता है कि वो आके कहे कि नहीं है, मुझे मालूम है कि ये मुश्किल होगा, बट वी हैव टू कम टुगेदर, right? And this was tailor made for him, still is tailor made for him. But I just don't know where that Khan, that inspirational Khan is, because if he were to inspire this nation, I think Pakistanis would rally and there would be a response and people will come together as they need to at this moment in time. I don't know what are your thoughts about it. Just getting to the anti-PTI thing, you are anti-PTI. My only issue is not with anti-PTI. I am also anti-PTI. It's the problem with this assumption that people think if you're anti-PTI, that necessarily means you're pro-PPP or pro-PMLN, which may not be true. You could, I mean, you could be a socialist, you could be an anarchist, you could. It does not mean that you necessarily jale ho ya patwari ho just because you're anti-PTI. And one thing that has been quite good in America is Biden is still punching Trump, but other than that, Democrats are pretty silent. They've realized it's a huge pandemic, and whether it be Mitch McConnell or senators, there's widespread support for the stimulus package. पाकिस्तान में मसला ये political बहुत ज़्यादा कर दिया है. सो इवन अगर
मुराद अली शाह कोई अच्छा काम कर रहा है, इट्स फाइन, ही इज हेल्पिंग योर कंट्री। इट्स ऑलमोस्ट बिकम लाइक नहीं, ऐसा ना हो कि सिंध की परफॉर्मेंस फेडरल से बेहतर हो जाए। एंड एक तो हमारे जर्नलिस्ट भी रेटिंग्स के लिए ये चीज़ बहुत प्ले अप करते हैं। आई वुड रेट इमरान खान परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्वाइट हाई। आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब, बट द journalists were embarrassing, they embarrassed themselves and the country to be sitting next to the prime minister। मतलब यार आप बच्चे हो, आप 4 साल के बच्चे हो, आपका प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली नेशनल टीवी पे आपको बोल रहा है 2 मिनट चुप हो जाएं, 2 मिनट चुप हो जाएं, उनकी सुन लें। मतलब तुम क्लास में बैठे हुए हो, लिटरली किंडरगार्टन के बच्चों में ज़्यादा मैनर्स होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, आप ऐसे चिल्ला रहे हो। आई वांटेड माय क्लास टीचर टू वॉक इन एंड बी लाइक, इज दिस अ फिश मार्केट? एंड देन क्या सवाल है सर, हमारे कैमरामैन बैठे हुए हैं, उनको कोई मदद कर दें, उनको कोई रिलीफ पैकेज दे दें। सर मीर शकीलुर रहमान को आपने पकड़ लिया है, क्रेडिट सर कार्ड। आप ये कर रहे हैं। Well, I think that is not a bad suggestion वैसे, credit card. It's not, it probably doesn't impact a lot of people, but it wasn't a bad suggestion or maybe it wasn't the place for that. And I think Imran Khan was spot on by saying कि मैं इस वक्त बैठा हूँ कोरोना की बात करने के लिए, और लोग जो सुन रहे हैं वो कोरोना सुनना चाहते हैं। Not that all of these are not issues, they are. And then Malik also made it about himself and it became a personal debate। और मतलब पेटी शॉट्स ना, आतिफ मियाँ से भी बात कर लें, एंड देन इमरान वाज लाइक हाँ कर लिया, व्हिच आई एम होपिंग कि कोई फार राइट हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो क्लिप करके ये देखें बाहर आतिफ मियाँ से बात कर रहे हैं, ये यहूदी साजिश प्रूवन ना करें। बट अगेन दीज आर नॉट द टाइम एंड प्लेस फॉर दैट। सो in terms of what you're talking about Imran Khan, I agree, a lot of people look at him as almost the moral compass of the country as well, because और कुछ हो ना हो एक मॉरल अथॉरिटी तो है कि यार ये बंदा सही है, नेक है। तो व्हेन ही केम ऑन टीवी व्हेन द फर्स्ट एड्रेस टू द नेशन एंड ही सेड कुछ भी नहीं है, फ्लू की तरह है, घबराना नहीं है, दैट वाज वेरी डेंजरस। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वेंट ऑनलाइन और लाइक हमारे माँ बाप जिनको हम समझा रहे थे कि मसला क्या है, अब वो हमें कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है फ्लू की तरह है, कुछ भी नहीं है। एंड दीज आर एजुकेटेड पीपल हु आर ऑन ट्विटर। तो जो सड़क पे बंदा है उसने तो और ज़्यादा यकीन कर लिया होगा, जिसको पता भी नहीं होगा कोरोना क्या है, जिसका ऑलरेडी एक बिलीफ था कि कुछ भी नहीं है। बिकॉज इफ सिम्टम्स आर लाइक फ्लू, उनको तो फील होगा कि हाँ ये तो हर साल होता है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो देन दैट नैरेटिव बीइंग विंडिकेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वी लॉस्ट दोस 3-4 days where the anti-lockdown narrative got pushed a lot because प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया था। तो वो जो एंड वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर वो पहले दिन हो जाती, we would never be able to quantify how many lives that would have saved, but it definitely would have made an impact on flattening the curve। या सिर्फ वो बैठ के सिर्फ समझा ही देते कि यार फ्लैटनिंग द कर्व ये होता है, सोशल डिस्टेंसिंग ये होती है। पर मसला वही है ना यार, जो ट्रम्प का है कि इकोनॉमिक नंबर्स अगर इफेक्ट हुए तो आपकी अप्रूवल रेटिंग इफेक्ट होगी, आपकी अप्रूवल रेटिंग इफेक्ट होगी तो आपका अगला इलेक्शन इफेक्ट होगा। सो व्हेन यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ बीइंग इलेक्टेड द नेक्स्ट टाइम, you forget that your primary responsibility is for the people right now। पाकिस्तानी बचेंगे तो पाकिस्तान रहेगा ना। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस नैरेटिव कि यार हमने चलें कोरोना से तो लड़ना है लेकिन इकोनॉमी भी बचानी है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि भाई अगर कोरोना से नहीं लड़ा तो इकोनॉमी होगी नहीं बचाने के लिए, या व्हाइल डूइंग दिस वी हैव टू कीप द इकोनॉमी रनिंग एज वेल? यार उसके अंदर ये थोड़ी फ्लॉड लॉजिक काफ़ी इस्तेमाल हुई। आई एग्री विथ यू कि जो 3-4 दिन जो लूज हुए इन द प्रोसेस, इवन राइट नाउ लाइक yesterday मैं खानजादा का शो देख रहा था फॉर 15 minutes। आई वांटेड टू सी what all the provincial leaders are saying। तो उसके अंदर every single one of them conflicted what the prime minister had said via video conference। तो गिलगित बल्तिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, वो कह रहा था यहाँ तो कोई पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है। सिंध गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि पोर्ट तो बंद ही नहीं हुआ था, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पोर्ट बंद हो गया था कराची का। सो इट्स जस्ट कंफ्यूजिंग, राइट? एंड आई एग्री, वो एक लैक ऑफ क्लैरिटी जो है वो प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज conflicting messages in a crisis are terrible, especially in a health crisis। इकोनॉमी वाले सवाल पे यार देखो, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी जो एट द वेरी कोर दो लोगों के दरमियान ट्रांजैक्शन होती है, राइट?
कि मैंने तुम्हें सेल फोन का केस बेचना है, तुमने मुझे पैसे देने हैं, मैंने तुम्हें च्युइंगम बेचनी है, तुमने मुझे पैसे देने हैं, या कुछ और करना है। तो जब वो जो दो लोग हैं वही बीमार हो जाएंगे तो इकॉनमी बचेगी क्या? अगर उनमें से उनके ख़ानदान में लोग इंतकाल कर जाएंगे, या उनके रिश्तेदार जो हैं वो बुरी हालत में होंगे इस डिज़ीज़ की वजह से, या whatever that might be, उस माइक्रो लेवल पे अगर वो ट्रांजैक्ट नहीं करेंगे तो इकॉनमी तो बचेगी नहीं। अब हाँ, सवाल बात सही है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल सिक्योरिटी लोगों के पास नहीं है, इंश्योरेंस प्रोग्राम नहीं है, इनफॉर्मल इकॉनमी है, तो लोग कैश पे काम करते हैं। और अगर गिजरी पे तुम चले जाओ और वहाँ पे जो लोग बैठते हैं डेली वेज अर्नर्स, उनकी एक दिन हड़ताल हो जाए तो वो पैसे लूज कर जाते हैं, राइट? दे जस्ट गो हंग्री दैट डे मोर देन लाइकली। तो वो बात उस वक्त तक ठीक है कि हाँ, लॉकडाउन का एक इकोनॉमिक कॉस्ट है, लेकिन वो इकोनॉमिक कॉस्ट प्लानिंग के साथ साथ आप मिटिगेट कर सकते हो। कैसे? कि आपने चैरिटीज़ को इन्वॉल्व किया, आपने लोगों को इंस्पायर किया, आपने कहा कि आप राशन दें, आप प्रिपेयर करते हैं ना लोगों को 2 हफ्ते के लिए कि जी ये हो सकता है, हो सकता है, राशन इकट्ठा करना शुरू कर दें, अपनी कम्युनिटीज़ को हेल्प करें, एक्सेट्रा। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं, लॉकडाउन नहीं करना हमें, क्योंकि उसका इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर आप बेसिकली जो आपकी लॉजिक है कि हम गरीब तबके को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्चुअली यू गोइंग अगेंस्ट दैट लॉजिक, बिकॉज सबसे पहले इम्पैक्ट उस पेंडेमिक का उसी गरीब तबके में आएगा, क्योंकि वहाँ क्लस्टर्स बनेंगे। उनके पास ना हेल्थ केयर के पैसे हैं, ना हेल्थ केयर का एक्सेस होगा, और वो काम पे जाएंगे, फैक्ट्रियों में काम करेंगे या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करेंगे, वहाँ एक दूसरे को जरासीम फैलाएंगे, कोरोना फैलेगा। अमीर तो घर पे बैठ जाएगा, जो सेठ होगा वो तो नहीं जाएगा, या वो ग्लव्स और मास्क पहन के पूरा बायो सूट लगा के चले जाएगा। लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो तो फिर भी इंटरनेशनल मीडिया या कहीं और देखेगा और कहेगा कि यार बैड सीन है, मैं तो घर पे रहता हूँ, अपने बच्चे को घर पे रखता हूँ। गरीब तो जाएगा बाहर। आपने उसको वो इनकम नहीं दी या वो सिक्योरिटी नहीं दी जिस जो उसको कन्विंस करे कि वो घर पे रहे। तो अगर आप लॉकडाउन इन्फोर्स नहीं करते ये कह के हमें गरीब तबके का सोचना है, तो आप एक्चुअली यू गोइंग अगेंस्ट दैट लॉजिक, बिकॉज सबसे पहले नुकसान तो उसका ही होना है। उसके घर के अंदर 8 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, उन सबको कोरोना होगा, वो सब जो हैं बीमार होंगे, उनका लाइफ लॉन्ग हेल्थ इफेक्ट्स होंगे। वी डोंट इवन नो व्हाट द लाइफ लॉन्ग हेल्थ इफेक्ट्स आर ऑफ दिस, लाइक पीपल आर सेइंग योर लंग्स आर स्कैर्ड और scarred for the rest of your life. I'm not a scientist, so I don't know, but that's what they've been writing about. तो उसकी तो ज़िंदगी, आपने उसके ख़ानदान की ज़िंदगी तो ख़राब कर दिया। अब अगर आप एक डेली वेज अर्नर है, वो 10 लोगों को अपने घर में सपोर्ट कर रहा है, और उसका खुदा ना खास्ता इंतकाल हो जाता है, तो फिर कौन उसकी सपोर्ट करेगा? That I think that there the logic is flawed there. You need a healthy society at the very beginning to survive this before your economy can be restored. That's just logic. या मैन, फिर आई वुड लाइक टू थिंक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने अहमकाना नहीं है, बिकॉज एट वन पॉइंट ही ऑल्सो सेड कि लोग सोच नहीं रहे, लॉकडाउन हो गया तो जो डॉक्टर अस्पताल जा रहे हैं वो कैसे जाएगा। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन बीइंग लाइक, दिस मैन कांट बी सीरियस राइट नाउ। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ही नोज दिस इज़ नॉट व्हाट वी मीन। कि अगर लॉकडाउन होगा तो ऑब्वियस ही बात है, मेडिकल हेल्थ केयर एसेंशियल सर्विसेज विल ऑब्वियसली बी अलाउड। दैट डजंट मीन कि आपने कश्मीर बना देना है कि कोई घर से निकलेगा तो उसको गोली मार दें। So I do think Imran Khan is well aware, and of course there is an economic decision to be made. जो stimulus package अब decision ले लिया गया है, but a lot of times I think it's deliberately being, I don't want to say stupid, maybe reductionist or simplistic, कि अवाम को ये समझ में आ जाए, बी पैनिक ना करे। दैट आइडिया कि पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है उर्दू में। आई थिंक एट टाइम्स इज जस्ट बीइंग डिलिबरेटली सिंपलिस्टिक। और फिर कभी-कभी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो जाती है कि नहीं जी, ये कर्फ्यू और लॉकडाउन जो एक सिमेंटिक फ़र्क बना दिया गया है कि सिंध ये कर रहा है, फेडरल ये कर रही है, नहीं मैंने यू टर्न नहीं लिया, पहले मैंने कहा था कि नहीं कर्फ्यू नहीं लगेगा, ये कर्फ्यू नहीं है। ऑल दोज़ आर जस्ट प्योर सिमेंटिक्स जो पार्टिजनशिप के चक्कर में हो रहे हैं। बट अ लॉट ऑफ व्हाट आई थिंक इमरान खान इज सेइंग इज not stuff he believes in as well. I think he's just saying it so that people don't start panicking or do something really stupid while panicking. कि कोरोना के साथ एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ना बन जाए या लोग लूटिंग ना शुरू कर दें. Do you think a lot of that is just simply narrative for that, or do you think the government
is genuinely the stupid. Yeah, I honestly don't know. I mean, it's if that is the narrative and if that's the communication strategy, it's a terrible communication strategy. Not only just in terms of के crisis के अंदर आप किस तरह communicate करते हैं उसकी एक अलग playbook होती है, but even just in terms of like आपके political impact उस confusion का उस narrative का, क्योंकि यार at the end of the day अगर आप प्योरली पॉलिटिक्स के हिसाब से भी अगर देखें तो तुमने शुरू में कहा कि आपका अगला इलेक्शन आपने जीतना है तो आपकी वो थिंकिंग जो है वो डिफरेंट होती है एंड इट्स गाइडेड बाय दैट्स ट्रू in most cases even in communist China, right? अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो एक रिस्क है बैकलैश का कि अगला टियानामन ना हो जाए, चाइनीज लोग सड़कों पे ना निकल आए कि भाई यू फेल टू प्रोटेक्ट अस एटसेट्रा. But I mean, the narrative just does not. I don't even know if they have a narrative strategy. कि जी इन चीज़ों पे बात करनी है, इन चीज़ों पे नहीं करनी, इस तरह कम्युनिकेट करना है. Like even that press talk, जो key prime minister ने, and I agree with you that I mean, I don't agree with you that the prime minister did a decent job. I think he could have done much better. If you have a low bar, even it still I think was not that great. Some of his responses because he can't stick to a script. I mean, that's what I know. I mean, I've seen time and time again he can't stick to a script. But it was more shocking to see कि वो जो जर्नलिस्ट है उसने सवाल पूछे, वो किस तरह जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे उनसे और किस तरह इंटरप्ट किया, and the lack of respect and decorum in that room was just astonishing to me. But even on the flip side, if the government is going to put the prime minister out in front of journalists, quote unquote, um, let's put him in front of actual journalists who are not just anchors, right? Let's have the reporter who's been on the health beat from Sama or from Dawn or from whatever, and have them. If you want to talk about coronavirus, there is a component of real journalists, actual reporters who've been reporting on this day in day out. आप उनको बुलाओ. आपने सिर्फ एंकर्स को क्यों बुलाया है? वो एंकर्स ने तो आपसे ऐसे ही स्टूपिड सवाल पूछना है ना, उन्होंने उल्टी सीधी चीजें उठानी है. लाइक वो भी एक स्ट्रेटजी में मिसिंग था. अब अगर सिंपलिस्टिक होना एक नैरेटिव स्ट्रेटजी है तो इट कैन बी डन मच बेटर इज माय पॉइंट. I don't know whether I can't make that judgment whether they are actually misinformed or not. But on the face of it, it just seems like at the very least they're confused about what their message should be. Um, and that's dangerous at the very least. Yeah, and Imran Khan constantly compared कि जी हम इटली नहीं हैं, हम अमेरिका नहीं हैं, हम यूके नहीं हैं. But even if I'm being very fair, Sindh was very proactive, was very clear, was very efficient compared to any other province or the federation. In fact, even KPK ka health minister has been very clear and very effective and has been at least seemingly very on top of things. तो हम अपने मुल्क में ही अगर देख लें, देयर आर मॉडल्स दैट वर्क, राइट? सो लाइक जिस तरह मैं बात कर रहा था सिंपलिस्टिक की, वन थिंग ऑल्सो इमरान खान सेड वाज, देखें अगर अब हम निज़ाम ऐसा लाएंगे कि 6 से 7 बजे ग्रोसरी स्टोर खुला हुआ है तो वहाँ लाइन लग जाएगी, सबको कोरोना हो जाएगा. हम लाइक, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ये क्या मेजर स्ट्रॉ मैनिंग कर रहे हैं कि आप खुद एक रिडिक्यूलस पॉलिसी पॉजिट कर रहे हैं और फिर खुद उसका मजाक उड़ा रहे हैं. ये तो कोई नहीं कह रहा कि जी 6 से 7 ग्रोसरी स्टोर खोलें और पूरी दुनिया का वहाँ पहुँचा दें. ये तो कभी किसी ने नहीं कहा. व्हिच इज़ व्हाई आई फील ही इज़ डिलिबरेटली बीइंग रिडक्शनिस्ट एंड सिंपलिस्टिक के लोग पैनिक ना करें या लोग समझ जाएं या एटलीस्ट उनके नैरेटिव की तरफ आ जाएं, which has worked. I do think Imran Khan got a lot of support after that press conference, and then people um, appreciated him, his fan base obviously, but even neutrals. Even I'm saying यार कि as somebody who's not even neutral is probably anti कि बुरी नहीं थी. And I agree बार लो था but still बुरी नहीं थी. तो yes, this is why I feel कि वो simplistic reductionist हो रहे हैं ताकि somehow they can have their cake and eat it too. कि यार कोरोना भी ना फैले, कोई मैजिकल मिरेकल सोल्यूशन हो जाए, या तो गर्मी से चला जाए या कोई वैक्सीन बन जाए या चाइना मदद कर दे. एंड वी इट्स जस्ट अ गेम ऑफ सर्वाइवल. हाउ लॉन्ग कैन वी स्टे अलाइव?
हमने थोड़ा बर्नी बाइडन किया, बट हैजंट दिस मेड यू अ सोशलिस्ट यार? दिस सो फॉर इंस्टेंस स्टिमुलस पैकेज, अब लोग कह रहे हैं कि जो लोग एंटी लॉकडाउन थे, कह रहे थे गरीब गरीब गरीब। भाई ये तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई नहीं कह रहा था कि आप लॉकडाउन करके गरीबों को सड़कों पे गोली मार देंगे। तो ऑब्वियस था दैट दे विल गेट अ स्टिमुलस पैकेज और दे विल गेट सम राशंस। इन फैक्ट देयर लाइव्स आर प्रोबब्ली बेटर, कि अब तो उनको खाना भी मिल रहा है घर पे, एज़ अपोज़्ड टू अ नॉर्मल लाइफ जो वैसे ही भूखे मर रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा लोग। दिस इज़ प्रोबब्ली बेटर फॉर देम, एट लीस्ट फॉर पीपल हू आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि अब एक गारंटीड डेली राशंस तो हैं। सो सॉरी, क्या मैं पूछ रहा था तुमसे? बीच में मेरा एक सवाल भी था, बट आई हैव कंप्लीटली लॉस्ट। हाँ, सोशलिज्म। आप मैं सोशलिस्ट नहीं सवाल हुए पूछ लेता इन हूँ। सब? सोशलिज्म से पहले सोशलिज्म से पहले मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ कि हाउ डू हुँ। यू थिंक ये would you have predicted that Sindh government would be this effective and efficient when it came to this crisis and would come out on top in terms of its response? Because I didn't think so. So I'm just curious about your thoughts के ये कैसे 2020 मतलब नया डेकेड ही है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो लीडिंग द चार्ज इन यार अ अगर आप गवर्नमेंट वैसे रिस्पॉन्स। पीपीपी की हिस्ट्री देखें, आप पीपीपी की अगर हिस्ट्री देखें इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पीएमएल एंड पीपीपी आर एफिशिएंट, एंड आई पर्सनली गिव पीपीपी मोर क्रेडिट। अब आप ये सब करप्शन वरप्शन ज़रा अभी सर साइड पे रखते हैं, जिस पे हम, और अगर उसके बारे में बात करनी है तो हमारी लास्ट पॉडकास्ट सुन लें, उसमें हमने दिस आइडिया ऑफ करप्शन और उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्कस की थी। पीपीपी इज़ एफिशिएंट। देयर लॉ मेकिंग, देयर ऑलवेज वेल इन्फॉर्म्ड। अगर आप जनरली भी उनके सेनेटर्स या उनके पॉलिटिशियंस या उनके लेजिस्लेटर्स की बातें सुने, दे सीम अ लॉट मोर वेल इन्फॉर्म्ड देन मोस्ट एनी अदर पार्टी। फिर अगर आप जरदारी की पहली गवर्नमेंट देखें, इट वाज एन एफिशिएंट गवर्नमेंट कंसिडरिंग जितने उन पे क्राइसिस आए। पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बी, उस टाइम ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ गया था, मैनेजिंग दैट। सी, ताहिरुल कादरी। सी, डी, द हकानी लेटर वाला। एफिशिएंसी तो थी गवर्नमेंट में, वेदर यू से कि जी उसको पैसे खिलाकर किया, ये किया, जैसे भी किया। और फिर ये जो एंट्रेंस्ड गवर्नमेंट्स है ना, दे नो हाउ द सिस्टम वर्क्स। सो अगर डेंगू हुआ है, शहबाज शरीफ को पता है कि यार किस तरह सब बंद करवाने हैं। वो फ़ोन करके करना है, वो अपने पटवारी को भेजना है, वो पर्सनली जाके एक फ़ोटो ऑप कराना है। शहबाज शरीफ ने लोगों के घरों में जा के स्विमिंग पूल उनके खाली करवाए थे, बिकॉज़ ही नोज़ कि किसको फ़ोन करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। सो ऑन ग्राउंड these parties are a lot more entrenched, they have a better system. PPP in particular, I've always felt is better informed, has a much better head on their shoulders, and Bilawal, for all his political flaws, is at least well read and is globally aware. वो बबल में नहीं रहता है इतना, पढ़ लेता है, कुछ देख लेता है। तो आई एम नॉट दैट सरप्राइज एक्चुअली। एंड इवन जब कायम अली शाह पहली दफ़ा रिमूव हुए थे, मुराद अली शाह आए थे, ही वाज एफिशिएंट इवन बैक देन। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आउट ऑफ देम पीपीपी और सिंध हैज परफॉर्म्ड द बेस्ट, बट इवन बाय दैट स्टैंडर्ड्स दे हैव बीन हाईली एफिशिएंट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डब्ल्यूएचओ ने बोला बेस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, बट आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि हाउ वेल दे डिड इट, इवन इन टर्म्स ऑफ द क्लैरिटी कि जी इस वक्त लॉकडाउन होगा, कुछ करना है आपने तो ये है आपके पास टाइम, ये कर लें, इस तरह होगा। एंड आई डोंट नो रेस्ट ऑफ सिंध में क्या हो रहा है, बट एटलीस्ट कराची में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रही है कि इस टाइम ये होगा, अब ये अगला स्टेप है, ये इसलिए किया जा रहा है, ये नोटिफिकेशन है। तो इट इज़ अ टेरिबल सिचुएशन, बट एटलीस्ट यू आर अवेयर। यू आर नॉट लाइक कि जब इमरान खान लॉकडाउन के अगेंस्ट बोल रहा था, उसी वक्त डीजी आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी लॉकडाउन हो रहा है। सो पीपल आउटसाइड ऑफ सिंध वर लेफ्ट कंफ्यूज कि जी हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर जब हुआ भी तो इतना सडन हुआ दैट पीपल डिडंट गेट दैट लीवे टाइम ऑफ 24 to 48 आवर्स टू एटलीस्ट फिगर एवरीथिंग आउट। एंड सिंध में तो मॉल्स और स्कूल्स वगैरह बहुत पहले से बंद है। तो मैं तो नहीं बिलीव हम्म। करता कि 2 दिन में हमारा कर्व फ्लैटन हो गया। सो ऑफिशियल फिगर्स आई एम नॉट बाइंग, बिकॉज इतना जल्दी हो नहीं सकता। जिनको इन्फेक्ट होना था वो लॉकडाउन से पहले हो चुके हैं, और वो अब 2 3 4 दिन पूरे हफ्ते में उनके जब सिम्टम्स आएंगे तब hordes will come to the hospital. So I don't believe the official statistics इतना ज़्यादा कि 2 दिन में हमारा कर्व इतना फ्लैटन हो गया। बट स्कूल्स, मॉल्स या लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स बहुत पहले से बैंड थी। सो यस, सिंध गवर्नमेंट हैज़ कम आउट लुकिंग ग्रेट, एंड आई एम नॉट दैट सरप्राइज।
अब आप बताएं मुझे, आप सोशलिस्ट बन गए? हाँ नहीं, और सोशलिज्म पर नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा तुम्हारा सवाल, लेकिन आई एग्री। आई मीन पीपीपी एक तरह से दे आल्सो हैड ट्रायल बाय फायर, राइट? तो वो फ्लड जब आए थे तो जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और वो वेकेशन पे थे। उससे भी मुझे लगता है उन्होंने कुछ सबक सीखा उनकी पार्टी ने कि किस तरह क्राइसिस में रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और अवाम जो है वो क्या चाहती है, बिकॉज दे बिन देयर एंड बिन क्रिटिसाइज राउंडली एट दैट पॉइंट इन टाइम। और दूसरी चीज़ एफिशिएंसी पे, मुझे याद है हम जब बात कर रहे थे लास्ट टाइम ऑन योर पॉडकास्ट, तो 18 अमेंडमेंट पे हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। और आज मुझे लगता है लोग जो 18 अमेंडमेंट के क्रिटिक्स हैं, वो वेदर देर इन सिंध, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, whatever, will actually be not critical of it, because it is the 18th amendment that has allowed places like Sindh and KP to respond the way they have, क्योंकि उन्होंने devolve कर दिया था power, and it enabled provinces to respond more aggressively as they saw the information at a time when the federal government was not clear. So again, that 18th amendment is a people's party push in a time of crisis, so we have to appreciate that as well. Socialism pe, yeah, okay. So no, I'm not a socialist, and I don't think uh, अगर मेमन सोशलिस्ट बनने लग गए तो काफ़ी बैड सीन हो जाएगा, लेकिन at the same time, you know, I do believe, I don't think it's socialism to say that the minimum wage in the United States should be $15 or should be a living wage based on where you live. It should be, I think, even especially in a crisis like this, like आप हम सब ने देख लिया है कि जो ग्रोसरी स्टोर का वर्कर है जो मिनिमम वेज कमाता है, या जो रेस्टोरेंट डिलीवरी ड्राइवर है जो आपकी टिप्स पे उसका गुजारा होता है, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ही आपका घर बचाया है। लाइक मेरा घर तो एटलीस्ट, लाइक अमेजोन प्राइम से डिलीवरी आती है या मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाता हूँ, वहाँ पे अगर वो लोग स्ट्राइक पे चले जाएं और कहें कि नहीं हमें $25 घंटे के दो, वरना हम नहीं आ रहे यहाँ काम करने के लिए, तो क्या करेंगे हम? Right? So healthcare bhi hona chahiye. I mean, I don't agree that the healthcare system should be privatized the way Bernie is talking about it. It's not, that template does not even exist in a place like Germany, if you look at it. But I do agree that healthcare should be available and accessible to all at in a cost-effective way, and a public option where the state can say, "Here's my alternative to the private sector," and it is efficient. And if people say, "Okay, I'd rather pay $100 less to get the government option because it is pretty good in the way it's structured," then that's good. And if I want to pay $100 more to get a private insurance because I have certain conditions or certain needs that I want to be fulfilled through that private insurance, then so be it. But I think US के अंदर it's less about, we've I think a lot of people have forgotten the definition of socialism at its very core. It is that the state owns a significant chunk of your economy and runs a significant chunk of your economy. And I ideologically don't believe that that's the job of a state. Whether it is running state-owned enterprises, whether it's running your healthcare system, whether it is running your transportation system, I just think that that breeds inefficiency over time. But the state has a responsibility in a capitalist society to regulate effectively all sectors of society, and make sure that large But specifically companies abhi, are not getting away. should the state take care of all your expenses? If you're infected by the coronavirus, should the state take care of all of your expenses? Yes or no? Of course, it should. क्यों भाई? ये तो फिर क्यों? ये तो फिर सोशल हेल्थ केयर है। आप करें? नहीं, अब सोशल आपको हेल्थ अगर केयर कोई नहीं और है, बीमारी इट होती इज अ तो आप पेंडेमिक। खुद पैसे देते ना, और अगर पैसे नहीं होते तो आप रोड पे जाते। तो फिर अभी भी व्हाई इज इट डिफरेंट विद द कोरोना वायरस? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हेल्थ केयर तो सबके पास होना चाहिए। आई डोंट थिंक एनीवन शुड गो बैंकरप्ट बिकॉज दे डोंट हैव हेल्थ केयर एंड गेट सिक, राइट? सो there is a responsibility of the state to provide a bare minimum net to you, especially in a crisis like this where people's incomes are being lost or their healthcare bills are piling up because of the fact that this is just a crisis that no one saw coming, right? I mean, it's just global in nature. And that is the social contract, right, between a state and a citizen, is that I pay you taxes, I act as a good citizen, I do my share of job responsibilities, I pay my property taxes, and in return you give me certain services, plus you give me the ability to save myself when a crisis hits, whether it's a flood, earthquake, or a pandemic.
I am giving you money for years on years on end, so that when this crisis comes, you stand behind me and make sure that I don't go under. And I don't think that's socialism. That's just the basic structure of a democratic society where a social contract is active and vibrant. आई डू थिंक वी विल कम आउट इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई मीन डिपेंड्स, अगर ट्रम्प सही कह रहा है ईस्टर तक ठीक हो जाता है तो फिर तो शायद हम 1-2 महीने में ठीक हो जाएँगे। आई रियली फील we're in this for the long haul. I do think the next few months look grim. तो अगर खुदा ना खास्ता this drags on beyond the summers, I do think the world at the other end will be a lot different. So अभी अब जो stimulus package भी है, it has a lot of socialist tendencies. So even if we won't have a strict socialist system, there is a lot inherent to our system which we need to question, whether that be the excess of Wall Street, whether that be the existence of billionaires. All of that needs to be fundamentally questioned कि यार हम ये दुनिया चला कैसे रहे हैं? And when push comes to shove, if this is how we act in a global pandemic, why can't we act like this all the time? Why can't we ensure that healthcare is a fundamental right, whether that be Pakistan or the US? And just you also said, no one deserves to go under. No one deserves to go under just because they got sick. अभी हम बात कर रहे हैं, चलें जी कोरोना हो गया, पर अगर आप अपने एम्प्लॉयर की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान में हम बात करते हैं, यार कोई कोल माइन पे काम करता है, कोई मजदूर है, अब डेली वेज लेबरर है, वो सारा दिन ईंटें उठा के डालता है, अगर कोई इंजरी ना भी हो, गिरे भी ना, ओवर टाइम तो उसकी कमर टूट जाएगी, उसके इलाज होंगे या तो वो बेड रिडन हो जाएगा। दैट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द लेबर ही हैज पुट इन। सो आइदर द कंपनी और द स्टेट थ्रू द टैक्सेस दैट द कंपनी पेज नीड्स टू टेक केयर ऑफ दैट। सो जो वो फंडामेंटल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं जिसमें द बेसिस इज सिक्योरिटी, द our definition of security needs to be extended to a way of life that at least guarantees your fundamentals, which includes healthcare, which includes education. And hopefully after we're done with this and we see a better day, ये चीज़ें तब भी अहमियत रखें और ऐसा ना हो कि जो harsh lessons हम सीख रहे हैं वो हम भूल जाएं। Do you think these stimulus packages are socialist in nature or at least have socialist tendencies? इससे आप agree करेंगे या you think कि नहीं ये तो is part and parcel? Yeah. Let me answer that first, and I'll come back to how it changes the world, because I have some thoughts on that, and I would love your thoughts on it as well in terms of how the world changes. But on the stimulus package, some components of it are, I wouldn't say socialist, I would say they're progressive in nature. And that is a direct function of the fact that United States के अंदर particularly house level पे even leading up to the November election एक shift हुआ है in the Democratic Party in terms of how do you benefit workers and how do you save workers. And then the shift, another reason why even the Republicans have sort of come on to this side now is that the economists by and large have consensus on it. So I don't know, I'll send it to you. There's a Planet Money podcast a week or so ago. It had the one of the chairs of the Federal Reserve on the open market committee side, which is the side that decides on how to lower rates and respond to these crises, etc. And he was there in the Great Depression, recession. तो वो भी मतलब had consensus कि he was like at this point in time the most effective response is कि Fed rate cut करे जीरो पे, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस वक्त 1,000, 1,200, 1,500 डॉलर महीना हर अमेरिकन को दे, क्योंकि इस वक्त वो लोग काम नहीं कर रहे और वो आपने देना ज़रूरी है। वो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन अ क्राइसिस इज इम्पोर्टेंट, एंड द फेड हैज़ बिन रिसर्चिंग दिस फॉर द लास्ट डेकेड। सो वो एक थिंकिंग इकोनॉमिस्ट्स के अंदर भी इवॉल्व हुई है, right, which is why you're seeing this shift. At the same time, I think Republican side per bhi ek awareness hai, and that is like primarily because of what Trump has done to the Republican Party, is that it is less beholden to corporate interests and more beholden to the populist base of Trump. And populist base of Trump right now is struggling with this shutdown. I mean, let's just be honest. Like, if you look at their demographics, if you look at the majority of the people, like in terms of what we know who voted for him, they're not that well off and they're all struggling, right? So that's why some of the socialist stuff that you're seeing with unemployment insurance, with universal basic income is there. And I think that's a good thing. We need to move in that direction, because ultimately guaranteeing a minimum
level of safety and life to people, so that they don't rack up credit card debts just to pay their grocery bills or pay their electricity bills, is just fundamentally wrong, even in a capitalist society like the United States. That's just my view. On changing the world, I think it definitely changes. Like, even अगले हफ्ते भी अगर आप दुनिया खोल दें और सब ठीक हो जाए कि जी कोरोना ख़त्म हो गया, आई थिंक दिस इज़ a bigger event than 9/11 in terms of its impact it will have on the world. I think it's definitely, as an economic event, much, much, much bigger than the Great Recession. And I think it just changes the world and provides opportunity. And, for countries like Pakistan, it provides an opportunity. But yeah, I think it does change the world. I don't know. How do you think it will change the world in terms of coming out of it on the other side? आई हैव नो आइडिया यार, मुझे जेन्युइनली मुझे जेन्युइनली लगता है we're in this for months. I don't think this is a 2 हफ्ते का गेम. I don't think this is a महीने का. So I really have no predictions. I can go anywhere from a zombie apocalypse to a sunny day tomorrow, and it just goes away. It all seems grim, but very specifically to, because you mentioned the Fed rates, the Prime Minister was alluding to that there is information that the masses may not be privy to, which is why this decision is not being made. और काफी sidestep करने की कोशिश की. I do think it was a very पर्टिनेंट क्वेश्चन कि जी हम अपने रीजन में ऑलरेडी इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे कर रहे हैं. जस्ट बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स वी आर गोना गेट अ डायरेक्ट इंजेक्शन. एंड अभी आप लोगों ने बोला है कि अगर कोई कारखाना बनाए तो उसको 7% इंटरेस्ट पे मिल जाएगा. एंड द जर्नलिस्ट वाज राइट, आई थिंक मालिक ही था, वेयर वाज लाइक ये किस किस्म की स्टूपिड पॉलिसी है कि दुनिया भर में कोरोना है, आप किसी जर्नलिस्ट को आप किसी कैपिटलिस्ट को कह रहे हैं, आप किसी बिजनेस ओनर को कह रहे हैं कि अभी तुम कारखाना बना लो तो हम 7%. कौन अभी जाके कारखाना बनाएगा? तो इन टर्म्स ऑफ जस्ट इंटरेस्ट रेट्स, should Pakistan reduce its interest rates right away? Yeah, no, it can't, right? Look, पाकिस्तान का क्राइसिस हमेशा से ये रहा है कि हम क्राइसिस के लिए प्रिपेयर नहीं करते और एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में जस्ट मतलब मंडलाते हुए जो है ना वो चले जाते हैं. जैसे आप टहल रहे हैं और आप गए, एक बंदे ने आपको तारीख लूट के लिया नाजुक कराची की मोड़ से सड़क पे, गुजर रहे हैं. फिर आप अगले दिन फिर हाँ, मतलब हमेशा जो है तारीख का वो जो नाजुक मोड़ है वो एक बड़ा सा जो है ना वो टर्न है, मतलब वो राउंड खत्म ही अबाउट नहीं है हो रहा, वो मोड़ वो. चलता ही जा रहा है. यार, इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में चलो कम कर दिया ना अब, मतलब फिर अब रुपी डिप्रिशिएट होने लग गया, तो अब लोग कह रहे हैं कि रुपया में कमज़ोर हो रहा है, तो ये हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज़ का नतीजा है. इसलिए भाईजान रेट कट करना था तो इंटरेस्ट रेट भी, एक्सचेंज रेट भी कट होगा, फिर आपका डिप्रिशिएट करेगा. दैट्स जस्ट अ बेसिक इकोनॉमिक्स. बट पाकिस्तान का मसला ये है कि the reason Pakistan can't do it is twofold, in my view. And again, just in terms of my view on the economy, I'm not an economist, and I think there are smarter, more well-informed people than I who can explain the logic or the functions behind it and how this works. But basically, अगर आप पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कट करते हैं तो पहली चीज़ तो उसकी ये होगी कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो तकरीबन ऑलरेडी रिवर्स हो रहे हैं. In the last year and a half, what Pakistan has done is that it has beefed up its foreign exchange reserves through what is called a carry trade. Carry trade ये होती है कि बाहर के जो कैपिटलिस्ट्स हैं, बॉन्ड मार्केट के एक्टर्स, वो कहते हैं कि यार मैं अगर यूरोप में या सिंगापुर में या यूनाइटेड स्टेट्स से $100 उठाऊं और $100 मैं बैंक से लूँ, तो बैंक मुझे कहता है कि तुम्हें 2%, 3%, 4% देने हैं उसके, बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ दैट लोन, राइट? चलो मान लिया 5% देने, लेट्स से हाइपोथेटिकली आपने 5% देने. वो कहता है कि यार मैं ये $100 5% पे लेता हूँ और वो मैं पाकिस्तान में डालता हूँ, तो मुझे उसी डॉलर अमाउंट पे $100 पे 13.5% मिल रहा है. So I am just basically, just by the function of moving money from one market to the other, I'm making about 8.5% more in terms of my return. That's called a carry trade. तो अब जब ये क्राइसिस आया तो कैरी ट्रेड रिवर्स होने लग गया क्योंकि सारे बॉन्ड ट्रेडर्स ने दे फ्लॉक टू द सेफ्टी ऑफ द यूएस डॉलर और द जापानीज येन और एसेट्स दैट आर रिस्क फ्री इन नेचर. तो पाकिस्तान ने भी देखा कि 100, 200, 300 मिलियन डॉलर्स जो उस कैरी ट्रेड के थे वो एग्जिट करने लगे. फिर जब आप उसके ऑन टॉप इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो वो रिवर्सल एक्सेलरेट होता है क्योंकि द इकोनॉमिक रैशनल ऑफ दैट ट्रेड becomes less and less attractive for you, especially in a risky environment.
तो रुपया जब वो डॉलर बाहर जाएगा तो इट मीन्स दैट your dollar is leaving the country, which means that it has the demand for dollars has gone up, which is why the rupee will weaken. So एक तो ये रीज़न है कि आप जल्दी इतना कट नहीं कर सकते क्योंकि आपका फिर फॉरेन रिजर्व जो है वो अंडर स्ट्रेन आ जाते हैं. दूसरी चीज़ इसकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर whether it's the consumer or whether it's businesses, majority of the economy is cash based. It doesn't work on credit. And the reason why the Fed or the Japanese Fed Reserve Bank or the European Union ECB cut rates is because they are economies that work on credit, and lowering the cost of credit has a pass-through effect on everything, including your mortgage rates. Right, so people have been refinancing like crazy. For example, in the United States, that passes on savings. Like I'm trying to refinance my apartment right now, and if I get a good enough rate, I will save about $600-800 a month. Right, that's just a function of the Fed cutting its rates. पाकिस्तान में तो कंज्यूमर पे उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता unless you have a credit card or whatever, which is just 0.5% of the population, not even. Right, तो वो एक लिमिटेड है. और उसके साथ साथ ये होता है कि आप अगर रेट कट करके डिमांड बूस्ट भी करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड है कंजम्पशन की वो इम्पोर्ट लेड है, तो लोग इम्पोर्ट करने लग जाएंगे. अब आपका रुपया वीकन हो रहा है क्योंकि कैरी ट्रेड रिवर्स हुआ, इम्पोर्ट ज़्यादा हो गए, एक्सपोर्ट तो अभी कोई आपसे लेगा नहीं क्योंकि वेस्टर्न मार्केट्स आर शट. तो you just go into another balance of payments crisis, which is where you're constrained in your response. कोई तुम होप देते ही नहीं हो यार कभी ज़िंदगी में. उज़ैर कह दिया करोगे यार नहीं कुछ अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, हम तरक्की कर लेंगे, हम कोरोना की वैक्सीन बना के दुनिया को बेचेंगे, हम अगली सुपर पावर हैं. कुछ तुम तारीफ़ें कर दिया करो यार. चाइना का सारा बिजनेस पाकिस्तान आ जाएगा, अभी हमें तेल मिल जाएगा. इट्स ऑल जस्ट ग्रिम ग्रिम सैडनेस फॉर यू. ग्लोबल रिसेशन पक्का है? नहीं तो होप कितने है. टाइम तक होप है? की क्या बात है? करूं क्या तुमसे? कर दो यार, कोई सच्ची बात कर दो. रिसेशन की तुम बात, सैड ही कर आई मीन देते हो आई हमेशा. कांट आई कांट रिसेशन का मुझे नहीं पता कितना चलेगा. आई मीन एटलीस्ट 2 क्वार्टर तक तो चलेगा. सो नवंबर तक तो बैड सीन है, एटलीस्ट थ्रू द समर बैड सीन है. एंड देन विल सी कि यूएस टाइप इकोनॉमीज कितना जल्दी पैसे लोगों तक पहुंचाती हैं. और अगर पैसे अच्छी तरह पहुंचा दिए इन टर्म्स ऑफ कैश ट्रांसफर्स, तो द मोमेंट पीपल आर आउट ऑफ देयर होम्स दे आर गोना वांट टू स्पेंड, बिकॉज बस हो गई यार दिमाग की 15 दिन के अंदर, बस थोड़ा एंजॉय भी करना है. तो वो पैसे होंगे तो लोग एंजॉय भी करेंगे बाद में. तो यू हैव अ वी शेप रिकवरी देन. On the hopeful side for Pakistan, I think um, in terms of how it changes the world, right, it offers a lot of opportunity for Pakistan. And I would first begin in terms of कि देखो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना स्टेट का और सिटीजन्स का, वो हमेशा से वीक रहा है. आई मीन वी देयर इज़ नो टू व्यूज़ अबाउट इट. लोग टैक्स नहीं देते. क्यों नहीं टैक्स देते? क्योंकि हुकूमत जो है उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती. हुकूमत क्यों सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती? क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते. राइट, इट्स अ कैच 22 पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन इन. This crisis is the moment for the government to step in a big way when everyone, rich, poor, middle class, is affected, and say that the state will provide you certain essential stuff so that you can survive this pandemic, whether it's 21 days, 31 days, 61 days, 180 days, whatever that might be. And whether you're an individual, a daily wage earner, or whether you're a small trader, or whether you're a big corporation, the state will stand by you in this moment of crisis. That is a very powerful way to reinforce and rebuild the economic social contract between the citizen of Pakistan and its government. And if the government does an effective job of that, you can change how Pakistan's economy functions. So I wrote about this earlier this week in my Dawn piece, was that कि अगर आप स्मॉल बिजनेस हैं इस वक्त, आपको इंटरेस्ट रेट कट से ज़्यादा, क्योंकि आप क्रेडिट पे इतना काम नहीं करते मोस्ट बिजनेसेस, आपको कैश फ्लो चाहिए. तो लेट्स से द गवर्नमेंट सेज कि यार अगले 6 महीने तक आपका जो यूटिलिटी बिल का जो ड्यूज़ हैं या आपके जो जीएसटी के ड्यूज़ हैं, दे आर डिफर्ड, यू डोंट हैव टू पे देम. So that pads up your cash flow for the business. But the government can also say at the same time that that deferred payment, either you make it on a month by month adjusted basis once this crisis is over, if you want to, or we will waive this off if you decide to enter the tax net and comply with the tax code of this country. And that is a powerful way, right, to say, I am standing by you right now, but you need to do your part when this crisis is over. And that's true at the individual level. And I think there's an opportunity for Pakistan here in terms of reinforcing and rebuilding that social contract. On the flip side, in terms और of the अगर macroeconomy,
A lot. Go ahead. No, no, go for it. Microeconomy क्या है? Yeah, so on the macroeconomy, the opportunity is that when all is done here, companies will move and de-risk their supply chains from China, and they will de-risk their supply chain for any one country where they have too much supply coming out of, because they've realized कि अगर चाइना बंद होता है, वियतनाम बंद होता है, इंडिया बंद होता है, तो पूरी supply chain टूट जाती है. तो a lot of work will go into hedging against that. So if you are the Pakistani government, this is a massive opportunity to attract companies to your shore. Now, which is why if I was advising the prime minister, I would basically sit down with my economic team and be like, the moment this crisis starts abating in Pakistan and in places like China and the United States and Europe, prepare a list of the top 100 or 500 companies that have exposure in China that struggled with this crisis, and let's talk to every single one of them, and let's talk to them about what will it take for Pakistan to convince you to come and invest here, because we want your business and we are open for business, because global supply chains will move, and everyone, whether it's India, Bangladesh, Ethiopia, Rwanda, Vietnam, will look at that as an opportunity, and Pakistan must compete at that opportunity for that opportunity. And again, this is a big once in a lifetime opportunity, because fundamentally the world will change after this, whether it's on the economic side, whether it's on the healthcare side. And I think the government must plan now to reinforce the social contract at the domestic level and rebuild a relationship with international investors who are looking to move away from certain markets where they realize that they have too much exposure. So that's my hopeful part of it. Not bad, यार. I think इससे पहले कि तुम sad कर दो वापस, I think we should end it on the hopeful note so that people leave thinking कि maybe we will all get out of it, and then there's possibility of economic prospects for all of us. So we have hit the hour mark as well. So I think this is as good a note as any to end this, in case you want to add something else. Yep. No, I mean, just like before we leave, I mean, wishing you all the best. Stay safe. I think everyone tuning in, stay safe. Keep your distance. Wash your hands. Listen to the experts. Don't read too much about this crisis, because that has mental implications as well. So I, like, for example, I've stopped watching cable news. I tune in the morning, and I tune in for 30 minutes at night just to see what has happened, but that's about it. um, so, and I think people like you and I think a lot of the listeners that tune into both your podcast and mine, I'm assuming on general that they are well off and they're privileged and they have a roof over their heads and they have access to food, they have access to some cash flow. Their jobs are probably secure, at least for the time being. And, you know, they have a net below them that can take care of them. So I think if you are that person, donate to your local community, donate to your restaurants that you go to who can't do business right now, donate to charities, whether you're in DC or Karachi or Timbuktu, wherever you are. I think this is a moment where those that are not as privileged as us need our help, and it's important that we step up, even if that means that, you know, we dip into some of our own savings to help someone else. I think it's important that we do that, because this is a crisis where people and societies need to come together, and they are coming together. But I think it's important to recognize that we all have privilege, mostly, at least in my circle, people do, and we need to play our part. So that's just मैं my तो खुद last two बेरोजगार cents हो गया हूँ before we यार. say तुम bye. I don't know if you had anything सिक्योर else to जॉब say. की बात कर रहे हो. दो दो मेरी नौकरियां थी. एक मैं नापा पे पढ़ाता था जो बंद हो गया है, और दूसरा मैं लाइव Hmm. शोज करता था जो अब आई ऑनेस्टली in my head I'm thinking September, October. Honestly, I think packing 100 people into a room, that's not happening anytime soon, I believe. So yes, there is a lot of stress and Hmm. Hmm. anxiety, so do what you can to manage it for yourself and take care of your mental health as well. Stress और anxiety, मुझे तो खुद अब तक नहीं पता कि मुझे कोरोना है या पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, because I have trouble breathing, I have flu-like symptoms. It's just been a tough road for myself. मैं तो खुद I've been in self quarantine for about 10 days now, even though पाकिस्तान ने तो 2 दिन पहले लॉकडाउन इन्फोर्स किया था, मंडे को 3 दिन पहले. तो दिन भी भूल चुका हूँ मैं सारे. But yes, if we look at the world as one organism,
think of this as a major health scare, and hopefully on the other side we come out stronger. We change fundamentally what we think of our relationship with our neighbor or the person on the street, कि उसकी safety में आपकी safety है. Yes, corona makes it abundantly clear कि if one person has the virus then everybody suffers, but this is how society should function. If one person is going hungry or if one person is suffering incredibly, that should directly hurt you, and I don't mean just financially, physically, emotionally as well. इसी तरह society और nations बनते हैं, और nations who have done aggressive testing and have uh, employed social distancing and lockdown with discipline and with a nationalistic identity. हम इतना nationalism रोते हैं, या patriotism इतना है कि 18 प्लस जिस्म भी लगी हुई होगी तो उससे पहले नेशनल एंथम चलेगा, ताकि पहले आप खड़े हों फिर आपका खड़ा हो. लेकिन जब एक्चुअली आता है कि आस्क नॉट व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री, तब हम घर नहीं बैठ सकते. कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है. प्लीज़ थोड़े दिन घर बैठ जाएं, और जिस तरह उज़ैर ने कहा कि सिर्फ अपना ही नहीं, अपने साथ होगा सबका ख्याल रखें. So thank you so much, Uzair. I do feel better than I did after talking to you last time, even though we're in much worse times now. But hopefully, all one can do is hope and pray, and inshallah, we all come out at the other side a lot better than how we went in. Yeah, no, thank you for having me. Great talking to you as well. And I'm glad this time around I was No, no, at thank least you for pumped you having up a me bit then. on this crossover episode. Yeah, that Scooby Doo works meets, both वो देखा ways. Flintstones और Um, Jetstones एकदम साल हो जाते थे. बिल्कुल. But no, I think I wish you the best. I think stay safe, stay healthy, and both mentally and physically. And I think we'll get through this together. I think coming together is important at this point in time. So I think we will get through it. The human species is resilient, if anything else. And I think if we put our mind to something, we do a lot of crazy stuff that is astounding in nature. And I think we will do that with this virus as well. But we need to play our part, whether social distancing or helping others or just keeping ourselves at home. So, again, thanks for having me. We'll stay in touch and stay safe. Same, yeah, done. Either we'll put our minds together and come together, or we'll put some other organ together and just come together, but in a safe distance way. All right, man. Take care. Stay happy. Bye bye. Thank you.